Hi guys, in this video we will see how to set up an EKS cluster in a EC2 instance. Before starting this video, I hope you already have an AWS account. It's free and you get I think around $200 free for 6 months. So it's easy to make how to make an account on AWS. So let's start. In previous video we already see what we already see the Kubernetes architecture, what is a cluster, what components are in a cluster, what are nodes, what are components inside the nodes. There are two types of node we discussed. One is control plane and other one is worker nodes. Control plane node is only one, and, and there may be bunch of worker nodes in a cluster. So before starting this video, I'll let you know that what does EKS means. EKS EKS stands for Elastic Kubernetes Service that AWS provides to create that AWS provides a Kubernetes cluster. So let's go to our AWS console. That's how console looks. In search you have to type EC2. Why I am working on EC2? You can do it on local machine. I am using EC2 because I have to make a user that have all administrator access, because to create an EKS we will use a command line tool that known as eksctl. Before using eksctl you must have configured the AWS CLI in your local machine. I don't want to set up my AWS CLI on my local machine because anyone can make things, any service from my terminal. So I will go to on search and type EC2. Here you will see this dashboard. You can in this left side click on instances, or you can click here also on instances. Click instances. What are instances? If you don't know what are EC2, let me know in the comments. I can make a video on it. EC2 instance is basically a cloud server. Is your machine on cloud. Let's launch an EC2 instance. What will be your name? Let's name it EKS YT. Which machine should I use? I will use Ubuntu. You can use Amazon Linux, Windows, anything. Okay. नेक्स्ट इंस्टेंस टाइप कौन सी मशीन चाहिए आपको? T3 माइक्रो बहुत है क्योंकि हमको कुछ ज़्यादा रन नहीं करना है. T3 माइक्रो गुड. लेट्स create new key pair. Let's give it a name, anything. Let's say EKSYT .pem file RSA, create key pair. It will download.
Okay, network settings, create security group. Yes, we will create a new security group. How much memory do you need? Let's say around 20 GB. 20 GB is enough, more than enough. Let's launch an instance. Our instance is creating. Let's wait. Successfully initiated. Click on this. That's our instance details. It's running. That's our instance IP address. That's our private address. IP this and this will be changed after you stop and start again this instance, so don't rely on this. These are temporary IP addresses. If you want to make an permanent IP address, you have to create a service like elastic IPs. We will not get into it. So connect, copy this command. Let's say I have to copy this. Let's go to our downloads, paste this. Here is, copy the command, open your terminal. I'm using Windows, so I use PowerShell. You can use anything in your operating system. My key is in downloads folder. My key is in downloads folder. I will paste this command. It will automatically pick this key from my downloads folder. I will SSH into yes, and I've connected to my EC2 instance. Let's clear this. Clear. So I'm into my this EC2 instance, or you can say it as my cloud machine. It's a machine that is mine, and it's on cloud data servers, data centers. Before jumping, we will come again to our this console. Let's write IAM. We have to create a user that have access to this AWS account. Means key, not this root user. A user can create anything, can create a S3 bucket, can create a cluster, or any services. Go to users, IAM, users, create user. That's right, EKS YT user. Next, attach policies directly. We will give it this administrator access. Next, create user. Come to this our user, security credentials, create access key, command line interface. Next, I give the confirmation, description, leave it empty. Now our user is created, and our access key and secret access key is also created. Now what to do with these keys? How to give an user to
इस यूज़र को इस टर्मिनल से कमांड कैसे चलाएं सिंपल भाषा में। तो उसके लिए हमको एक कमांड लाइन टूल चाहिए, डेट इज़ नोन एज AWS CLI। Type it on the Google AWS CLI. Come to this first link, not this installing वाली link। AWS CLI Linux हमने पहले से कोई इंस्टॉल नहीं करी है। To install the AWS CLI, run this command. Okay, copy and paste। If I type AWS not found। See, use the curl command, guided installation steps। वो बोल रहा है कि हमारे पास ये जिप टूल अनजिप टूल इंस्टॉल नहीं है, इसको इंस्टॉल करो इस कमांड को रन करने से पहले। लेट्स डू एज दिस documentation says। ओके, फर्स्ट स्टेप इज completed। वेरीफाई, ठीक है वेरीफाई हो जाएगी अपने आप। व्हाट टू डू नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन unzip this। ये भी यही बोलेगा कि आपको अनजिप करना है। sudo apt install unzip। पहले इस मशीन को अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड, और अपडेट भी कर लेते हैं। It's updating the machine is updated। Now we will learn sudo apt install unzip। Unzip is installed, clear this screen। whatsoever this, copy this, paste it, ls clear। if I type AWS not found। come to this step, run this। you can now run। if I type AWS now, yes, AWS is installed। now we have to give access to this CLI। किसको एक्सेस देना है? CLI का, जो यूज़र हमने क्रिएट करा है। we will type, let me clear the screen, big screen, AWS configure। it will ask AWS access ID, that's our access key। copy paste, secret access key, copy paste, default region name AP South 1। अगर आपको लग रहा है कि अरे मैंने एक एक्सेस सीक्रेट की देख ली, अब मैं तो यूज़ कर सकता हूँ, डोंट वरी, आई विल डिलीट इट आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। so don't try it, don't waste your time।
enter output format, leave it empty. Our AWS is configured. Now we have to install what step we have done till now. Let me write the steps. First we have done created a EC2 instance. Second, installed the AWS CLI in our instance. What third we have to do? Install kubectl and eksctl. This, let me tell you here before moving to the terminal, what are this kubectl and eksctl. We have taken an overview of this in the previous video. Let's talk about first eksctl. What is eksctl? Is a command line tool that AWS provides. By using this tool, we can create, delete, upgrade the Kubernetes cluster in the AWS. By using this tool automatically can create everything for our cluster. As you know what the cluster is, it's bunch of nodes. What are the nodes? The nodes are basically simply these are the EC2 instances. The control plane node is one instance, worker node 1 is second instance, worker node 2 second instance, and there can be multiple worker nodes. So by this eksctl command, this will automatically can create these instances, their volumes, their machines, what we need, and any services we are using like load balancer. This command, this tool will automatically can create it. Okay, let's talk about kubectl. What is kubectl? This is also in command line tool. From this tool we can create multiple resources in the Kubernetes cluster, inside Kubernetes cluster, or we can monitor also the Kubernetes cluster and nodes by using this tool. If for let's say if you want to create a pod, you will use this command in the upcoming videos. This command will be frequently used, so you will write it down, the important commands. It will be asked in interviews. So let's install these on our EC2 instance. Let's go to the browser, type eksctl, install you will see this link, set up kubectl and eksctl. I am not giving any link like other YouTubers do. Go to this link, go to this my repository, you will find all commands there. Just copy paste, figure it out, do browsing, सर्फ करो, सर्फिंग ही बोलते हैं ना उसको. कैसे कैसे इंस्टॉल करना है पढ़ो इन डॉक्यूमेंट्स को, जब जाके समझ आता है. आपको थाली में सजा के कोई चीज़ बढ़िया नहीं लगती. सो लेट्स सी दिस, सेट अप kubectl and we pronounce it like kubectl. You can also pronounce it like kubectl.
like eksctl. I don't know, I pronounce this eksctl and pronounce this like kubectl. Strange. Let's see, check if अरे भाई नहीं इंस्टॉल्ड है अभी. Yes. Install or update kubectl. Go to this Linux AMD 64. कौन सा Kubernetes वर्जन डाउनलोड करना है? लेट्स से हमें लेटेस्ट डाउनलोड करना है. कॉपी दिस कमांड, go to our terminal, enter this. It will install this. लेट्स से डाउनलोड हो गया है हमारा 1.35 वाला. ऑप्शनल वेरीफाई 1.35 वाला चलो कर ही लेते हैं. ऑप्शनल के ठीक है, वेरीफाई भी हो चुका है. ये वाला कर लेते हैं, चलेगा. kubectl says ओके, वेरीफाइड हो चुका है हमारा. लेट्स कम टू दिस chmod. chmod क्या होता है? परमिशन देने के लिए यूज़ होता है ये लिनक्स में. हमने इसको परमिशंस दे दी हैं. कॉपी दिस. by this we can use the command kubectl. Now we can run command kubectl. Let's see, kubectl get pods. अगर आप kubectl डालोगे और आपके में ऐसा लंबा सा लिस्ट आ रही है तो आपका परफेक्टली इंस्टॉल्ड है. अगर एरर आ रहा है, installed it again, read the documentation. In my case the kubectl is installed. Fine. Let's install the eksctl. This is the Linux ARM64. Where's eksctl? Yes, the EKS CLI is used to work with EKS clusters. See installation. Click on the installation for Unix, for Windows, for Git Bash. Let's see, where can we get come to this again. Let me see. For Unix this is okay. For Windows this. Copy this git bash command, paste this. I hope it will run. ctl. No, it is not. डॉकर में नहीं चलाना है. कोई बात नहीं, अगर डिले हो रहा है तो हम सर्च करेंगे eksctl install on Linux. डोंट घबराओ मत एरर से.
the official CLI for Amazon eksctl. Come to this GitHub, go to the readme installation to download Windows, this Docker. अरे भाई लिनक्स का किधर है, और मैक ओएस फॉर विंडोज. Yeah, I think this. Yes, this Unix one. We are on the current page. If you see the Unix one, copy this command and paste it on your terminal. Clear. If you write eksctl, it will give this long list. It means our installed. Now, how can we create a cluster by using this command line tool eksctl? Let's come to our console, write there EKS. You can create cluster manually here, but इधर से थोड़ा complex है बनाना cluster. As you can see, there are no clusters running. Come to this, let's clear it. eksctl create cluster. What is the command? eksctl create cluster. Let's name it next EKSYT. This will be a cluster name. कौन सा रीजन में बनाना है? AP साउथ वन, टेट वन, मुंबई वाला. नोड टाइप क्या रहेगा? Node type will be t3 dot small. What is t3 dot small? What is node type is किस टाइप की आपको EC2 इंस्टेंस चलाना है, मतलब उस मशीन, उस इंस्टेंस के क्या वो कॉन्फ़िगर है. t3 dot small, I think it's an 2 CPU core machine, I think. Yeah, नोड टाइप t3 डॉट स्मॉल, मतलब जितने भी नोड्स हमारे बनेंगे इस क्लस्टर में वो इस टाइप की मशीन्स के बनेंगे. जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे, नोड्स मिन कितने मिनिमम नोड्स चाहिए हमको. जैसे ही क्लस्टर बने इतने नोड्स तो होने चाहिए, जिसमें से एक तो कंट्रोल प्लेन ही होगा. लेट्स से मिनिमम 2 नोड्स मैक्स. कितने वो ऑटो स्केल करे अगर ज़्यादा ट्रैफिक आए? इट विल ऑटो स्केल. डेट वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो. Kubernetes can self heal, can self auto scale and self deploy. That's the benefit of Kubernetes. If we hit it, nodes max हमने बताया नहीं कितने बनाने हैं, 3 nodes let's say. If we hit enter, it will start creating our cluster. It will create instances, it will create the elastic IPs, it will create volumes of those instances, and it will take 5 to 10 minutes. It's a long process. Let's see what happens after 5 to 10 minutes. Finally, after a long time, our cluster is created. If we go to our console, if we refresh it, you will see next EKSYT status active. Upgrade now. कोई अपग्रेड आया होगा Kubernetes का 1.35.
mostly. It's created. If to go EC2 dashboard, you will see that instances running 3, auto scale ग्रुप्स क्रिएटेड 1, इलास्टिक आईपी 1 है, वॉल्यूम्स भी 4 हो गए हैं। हमने तो खाली बनाया तो एक था जो रनिंग थे। इफ यू सी, हमने तो खाली एक बनाया था, बट 2 EKS CTL कमांड लाइन टूल ने अपने आप बना दिए। उसको एक्सेस कैसे मिला हमारे कंसोल का? हमने एक यूज़र बनाया था, उस यूज़र को हमने AWS CLI से कनेक्ट कर दिया था, उसको ऑथराइजेशन दे दिया था। सो इनमें से एक हमारी कंट्रोल प्लेन है, एक वर्कर नोड है। इफ़ यू गो टू अवर टर्मिनल, नाउ द रियल स्टार्ट वर्क। नाउ यू विल सी this terminal frequently clear. If I write kubectl get pods, what this command do? ये जितने भी pods हैं हमारे क्लस्टर में वो लेके दे देती है। What is output? No resources found in default namespace. Namespace क्या है? जिसमें हम बहुत सारी अपनी सर्विसेज रन कर सकते हैं Kubernetes की। If I write kubectl get namespace, or you in short you can write ns for namespace, you will see a default namespace। जब हमने टैप करा था kubectl get pods, no resources found in default namespace, मतलब इस default namespace में अभी कुछ नहीं है, कोई pod नहीं है। If I write kubectl run एक, let's say next pod image nginx, हमने क्या करा है, एक kubectl का पॉड चलाया है, उस पॉड के अंदर एक कंटेनर चलेगा nginx का। पर आप सोचे हो आपने तो इमेज डिफाइन, अरे कंटेनर क्या होता है, इमेज का ही तो इंस्टेंस होता है। नाउ इफ आई राइट kubectl get pods, you will see like this, next pod running this, and if I write kubectl get pods -o wide, -o wide का मतलब थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आउटपुट आएगा। ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन के साथ आउटपुट। ये इस वर्कर नोड में चल रहा है 192, ये आईपी है, लेट्स सी कौन सी है, 5319। इफ़ आई गो टू दिस, इसकी आईपी क्या है, ये तो हमारा कंट्रोल प्लेन है। Yeah, this third one is our control plane, second one is our worker node. We can run like this, kubectl describe this pod, it will give log this like, अब ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा डिस्क्राइब से, ये इस pod की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये इस नोड पे चल रहा है,
स्टेटस क्या है, रनिंग, आईपी इसकी ये है, कंटेनर में इमेज कौन सी है, nginx, लाइक दिस। Clear. One last thing, that after doing your work for let's say this, इस वीडियो का हमारा काम हो गया, तो हमको उस क्लस्टर को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना है, मतलब उसको रनिंग नहीं छोड़ना है। इफ़ यू लीव इट एज रनिंग it will exhaust your credits. So to delete in cluster we will run command like this, eksctl delete cluster, the name of the cluster, what is our name of the cluster, next eksyt, next eksyt, किस रीजन में था, P South 1, enter this. Do not delete manually because अगर आप यहाँ से मैनुअली ऐसे इसको डिलीट करोगे तो ये क्लस्टर ही डिलीट होगा, बहुत सारी चीज़ें डिलीट नहीं होंगी, लाइक ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स शायद डिलीट हो जाए, पर इलास्टिक IP is not get deleted and they charge very well. So always delete from this command line tool, that is eksctl. It will delete all the services in which in this cluster next eksyt created, or so it will take time, like it had take time during the creation of our cluster. So that's it for the video.